Welcome back to Engraving Mind. So today we are going to talk about dimensional analysis. Actually, this topic is related to your class 11th physics. So one by one, we will understand that what is the relevance of this chapter in your class 11th physics. So if I'm going to say how many times 2 is involved in 128. So you will say 2 multiplied by 2 into 2 into 2 into 2 into 2, or you will say 2 to power 7, or I can say 2 involves 7 times in 128. With the same way, if I'm going to say how many times length is involved in area, because the formula is area is length multiplied by breadth. The unit of L, या length, can be represented as meter, and the unit of breadth will also be represented as meter. So meter multiplied by meter will become meter square, or we can say meter is involved 2 times in the area. जो मीटर है वो एरिया में कितने बार इन्वॉल्व है? 2 बार इन्वॉल्व है. With the same way, if I'm going to say volume, volume stands for length multiplied by breadth multiplied by height, because the unit of length is meter, breadth is also meter, and height is also meter. Meter multiplied by 3 times will become meter cube, or we can say meter involved 3 times in the volume. Long story short, dimensional analysis is a kind of analysis, is a kind of observation which tells us that how many fundamental quantities are involved to making any derived quantities. I am again repeating my words. डायमेंशनल एनालिसिस वो एनालिसिस है जो हमको ये बताती है कि किसी भी ड्राइव्ड यूनिट या ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कितनी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलकर बनी है. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एरिया और वॉल्यूम हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ से मिलकर बनी है, और एरिया में लेंथ 2 बार इन्वॉल्व है और वॉल्यूम में लेंथ 3 बार इन्वॉल्व है. सो if we are going to talk about fundamental quantities, you had already learned in your previous classes that there are 7 fundamental quantities are over there. It is given like that: length, mass, time, amount of substance, luminous intensity, electric current, and temperature. In physics, it is abbreviated as length can be represented as L, mass can be represented as capital M, time can be represented as capital T. With the same way, amount of substance, we can simply write MOL, mole. Luminous intensity stands for capital C, small d, stands for candela. Electric current, कैपिटल ए, और इसको लिख दिया जाता है कैपिटल ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर. विद द सेम वे टेम्परेचर स्टैंड्स फॉर कैल्विन और कैपिटल के. सो दिस वन इज द बेसिक एब्रिविएशन ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज don't depend upon any other quantities. They are free, independent from each other. Like your natural number from 1 to 9, they are not depend upon each other. With the same way, these 7 fundamental quantities in physics does not depend upon any other quantities. But if I'm going to talk about derived quantities, I'm taking a certain example. Suppose if I'm going to say density. So density stands for mass divided by volume. It means in density, 2 quantities are involved. First is mass and the second one is volume. If I'm going to talk about unit, the unit of mass you can write as kg, and the unit of volume you can write as meter cube. So the unit of density will become kg per meter cube, because here we are representing mass as capital M. So when we will write our dimensional formula, so it will become in big bracket M, and the fundamental, because here it is a volume, so volume stands for length multiplied by breadth multiplied by height. So it will comes out to be L cube, or the overall formula will become ML minus 3. So we can say that the dimensional formula of density can be written as ML की power minus 3. So now we are going to take some different examples of dimensional formula, and now we are going to find the dimensional formula with the help of some basic calculation. Because simply you can say velocity is equal to displacement upon time. Velocity होता है displacement whole divided by टाइम. बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं L से, और टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं T-1 से. सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ योर वेलोसिटी विल बिकम LT-1. नाउ हियर वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट डायमेंशनल फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फिजिकल क्वांटिटी. इट मीन्स either I am saying velocity, or I am saying relative velocity, और मैं क्या बोल रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी बोल रहा हूं, और आई एम सेइंग एब्सोल्यूट वेलोसिटी, और आई एम सेइंग एवरेज वेलोसिटी,
In all these cases, the dimensional formula will remain same as LT minus 1. It means dimensional formula is independent of the nature of the physical quantity. It only depends upon the characteristics of the quantity. Means velocity is equal to displacement upon time. This one is the general formula. So the dimensional formula will always remains LT minus 1. तुम अब जाके वेलोसिटी का कैरेक्टर कुछ भी बदल दो, तुम जाके उसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलने लगो या फिर एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलने लगो या एवरेज वेलोसिटी बोलने लगो, इन ईच एंड एवरी केसेस द फॉर्मूला विल रिमेन सेम एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला विल आल्सो रिमेन सेम. Now the second one is gravitational constant. We already know the formula for gravitational force is given by F is equal to capital G m1 multiplied by m2 divided by r square. From here, if you are going to find the value of capital G, so the value of capital G will become F r square divided by m1 multiplied by m2. Now from here, we have to find the dimensional formula of gravitational constant capital G. So first of all, we have to find the dimensional formula of force, then length, then mass. Because we already know force is equal to mass multiplied by acceleration multiplied by distance का square multiplied by m1 multiplied by m2. We already know mass is represented as m. mass को हमने m से represent कर दिया. Acceleration it is represented as LT minus 2 because acceleration होता है change in velocity with respect to time. Velocity stands for LT minus 1 divided by t, so it will become LT minus 2 multiplied by r. r stands for L की power 2 होल डिवाइडेड बाई m1 यानी कि एक मास आ गया और अगेन दूसरा मास आ गया. When you will solve it, these two will be cancel out, m and m will be cancel out, so it will become L3 t minus 2 divided by m, or you can write, or you can say m minus 1 L3 t minus 2. This one is the dimensional formula of your gravitational constant. It stands for capital G. One more important information that the value of capital G is given as 6.67 into 10 की power minus 11 Newton meter square upon kg square. This one is also important information that you have to remember the value of gravitational constant capital G. In various numerical, you can use the value of capital G like that. The third one is modulus of elasticity. As you will go further in your physics, one very most important topic related to the mechanical properties of matter. In this topic, you will talk about elasticity. So there is one term, modulus of elasticity and Hooke's law. So elasticity stands for the ratio of stress to strain. So I will choose another slide. So modulus of elasticity in short forms, I will say modulus of elasticity as MOI. It is given as stress divided by strain. Actually, this topic is related to your mechanical properties of matter. Stress, what is stress? Stress is defined as force per unit area, and strain is defined as change in length with respect to original length. Change in length with respect to original length. So this one is the correct abbreviation of your modulus of elasticity. इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इस केस में यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या रिजिडिटी मॉडुलस, मतलब E की वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर फोर्स और एरिया चेंज होती रहेगी, इस तरह से लिखा जाता है. बिकॉज स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुमने ये पढ़ रखा है, प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स पर एरिया. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस प्रेशर एंड स्ट्रेस? माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस? ये दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया है, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया है. एक्चुअली दिस फोर्स इज रिलेटेड टू योर इंटरनल फोर्स. ये कौन सा फोर्स है? इंटरनल फोर्स विच विल बी क्रिएटेड बाय द बॉडी to resist the application of force. This one is the basic difference between stress and pressure. Pressure generally, this one is a kind of your external force. External force. Pressure stands for external force per unit area, while stress stands for internal force per unit area. So now we are going to calculate the dimensional formula. It means if you want to calculate the dimensional formula, at least you have a very thorough knowledge about the formula of that physical quantity. So force, again we can say the dimensional formula of force is given by force is equal to mass multiplied by acceleration. So we can directly write it as mlt minus 2 divided by area. Area stands for L2 whole divided by
change in length with respect to original length, L, इसकी भी L, इसकी भी L, L will be cancel out, यहाँ कुछ बचेगा नहीं, इसको ऊपर ले जाओगे, so it will become M L 1 minus 2 minus 1 T minus 2. So this one is the basic formula related to your modulus of elasticity E, ml minus 1 T minus 2. So with this way we can calculate the dimensional formula of different quantities. Now our next topic is application of dimensional analysis. It means why we are going to touch this topic, what is the importance of this topic. Actually we also check the correctness of any given equation with the help of dimensional analysis. Suppose if I am going to say any expression is written like that, if suppose I am taking the example of second equation of motion, it is given as s is equal to ut plus half at square, and you want to check that the given formula is correct or not. So what you have to do, you have to write the dimensional formula of left hand side as well as dimensional formula of right hand side. So here S stands for displacement. The dimensional formula of displacement is capital L in bracket. With the same way, if I am going to write the dimensional formula of right hand side, it will become ut plus half at square. U stands for velocity. The dimensional formula is given as Lt minus 1 multiplied by T plus half. A stands for Lt minus 2 multiplied by T2. So it will become Lt minus 1. अब बिकॉज एल टी माइनस वन एल टी प्लस वन विल बी कैंसिल आउट, क्योंकि अपॉन में जाएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो दीज टू टर्म्स विल बी कैंसिल आउट. हियर ओनली विल रिमेन एल बिग ब्रैकेट अपॉन 1/2 multiplied by t minus 2 t plus 2 will also cancel out. It will become length. So length plus 1/2 length will become 3/2 length. Or by the physical significance we can say in our left hand side it is also coming out to be length, in our right hand side it is also coming out to be length. It means left hand side dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula of your right hand side. दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है. हाँ, यू हैव टू नेग्लेक्ट द वॉट एवर द कॉन्स्टेंट इज कमिंग हियर, तुमको इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी सेम आ ही रही है जो कि लेंथ है. विद द सेम वे इट मीन्स वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला. हम डायमेंशनल फॉर्मूले के थ्रू किसी भी एक्सप्रेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं. विद द सेम वे इफ आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई फिजिक्स का कोई फॉर्मूला याद करते हैं. सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g. तो दिस वन इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. तो लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल टी आता है, यू ऑलरेडी नो कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर योर टाइम पीरियड. तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, टाइम स्टैंड्स फॉर टी, सो द डायमेंशन विल बिकम कैपिटल टी. 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, तो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हो गई. अगर हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन सॉल्व करेंगे सो इट विल बिकम अंडर रूट l बाई जी. अब रूट स्टैंड्स फॉर वी कैन से l बाई जी की होल पावर 1/2, उसका कोई सिग्निफिकेंस रहा नहीं. अब हम सीधे सीधे डील कर लेंगे किसमें, डायमेंशन फॉर्मूले में. तो आओ डील करते हैं. l स्टैंड्स फॉर लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन हो गई l. g स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन. चाहे मैं एक्सेलरेशन बोलूं, चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलूं, चाहे रिटार्डेशन बोलूं, ऑल दीज केसेस द डायमेंशनल फॉर्मूला विल रिमेन सेम lt माइनस 2. सो इट विल बिकम lt माइनस 2 और इसकी होल पावर क्या चल रहा है 1/2. अब यहाँ देखो l से l क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. t की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू t की पावर 2 की होल पावर 1/2. देखो 2 से 2 ये भी कैंसिल आउट हो गया. आंसर कितना आ गया, कैपिटल T. इट मीन्स अगेन वी कैन से दैट द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. Hence this formula is dimensionally correct. So we will continue in our next video and we will touch the next topic is fundamental relation between quantities.